Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the exercise of Kingdom Plantae Chapter 9 of class first year. So students, now we are discussing chapter number 9, that is Kingdom Plantae exercise. So question number 1, that is fill in the blanks. The first blank is, the sporophyte is diploid and spore producing generation. तो first blank के अंदर आएगा diploid, दूसरी blank के अंदर spore producing generation, and the gametophyte is haploid and gamete producing generation. ठीक है? So इस तरह से हम इसको fill करेंगे. इसमें 4 blanks हैं. Blank number 2, the motile. अब बुक में एक छोटा सा मिसप्रिंट है, उसको सही कर लीजिए. The motile sexual reproductive, asexual के बजाय sexual. The motile sexual reproductive cells are characteristic of bryophytes, blank में आएगा bryophytes, and are called gametophytes. Okay? Blank number 3, the sexual reproduction is said to be oogamous or heterogamous if the two fusing gametes are different. तो hetero का मतलब ही different होता है. So heterogamous कब होंगे? जब दो different gametes, means like egg cells or sperm cells, these are different gamete cells. So that is how. So the sexual reproduction is said to be oogamous or the heterogamous if the two fusing gametes are different or heterogamy. Blank number 5, it says, in the stem of monocotyledons, the bundles are scattered, while in the stem of dicotyledons, they are arranged in a ring. Blank number 6, it says, the double fertilization is the characteristic feature of class Angiospermae or flowering plants. Blank number 7, it says, the stem roots and leaves are the non-reproductive or vegetative parts, and flowers, fruits, and seeds are the reproductive parts of the plant. Blank number 8, it says, heterospory, blank mega, heterospory is the phenomena of the production of two kinds of spores in the plants. And last or ninth blank is, the naked seeded plants are included in the group Gymnospermae. Now the short questions. So the first short question is, question number 2, short question. The first short question is, how are ferns better adapted to life on land than liverworts and mosses? So the answer is, liverworts and mosses are non-vascular, while the ferns are vascular. Vascular tissue is involved in the support and transport of water and food and minerals, etc. etc. इसका B part है question number 1 का. Which of the following are nutritionally self-supporting? Okay. Which one of the following are nutritionally self-supporting? So number 1, the mature liverwort and moss gametophyte. And number 2 is mature liverwort and moss sporophyte. So dear student, the mature liverwort and moss gametophyte are nutritionally self-supporting. Clear? Question number 2, it says, the chances of survival and development of wind-blown pollen grains are much less than those of spores of adiantum. Comment on this statement. तो हमें इसमें comment करना है. The chances of survival and development of wind-blown pollen grains are much less than those of spores of adiantum. So you know, wind-blown pollen grains are widely dispersed and mostly are lost due to unfavorable conditions, while the spores of adiantum usually fall on a nearby moist place and they immediately germinate. Its part B is, question number 2, part B, account for the fact that megaspores are large and microspores are small. So megaspore, it is a 7-cell containing structure, while microspore, it has 2-cell structure. ठीक है? It is a 2-cell structure. So that is why mega का मतलब बड़ा और micro का मतलब small. And its part C is, what important advantages have angiosperms made towards the seed plant habit? So दो important adaptations इसमें हम लिखेंगे. एक तो seed enclosed in fruits. angiosperms में आपको पता है जैसे आम खाते हैं या सेब खाते हैं तो फ्रूट के अंदर ही सीड मौजूद होता है. दूसरा, इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन. तो एक फर्टिलाइजेशन से जाइगोट और जाइगोट से एम्ब्रियो, और दूसरी फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म टिश्यू, और एंडोस्पर्म टिश्यू से आके उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो वहीं से मिलेगी इनको. क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज, write a note on alternation of generations. So dear students, alternation of generation हम पढ़ चुके. The mechanism by which a multicellular diploid sporophyte generation alternates with another multicellular haploid gametophyte generation. This phenomenon is called as alternation of generation. Clear? और land plants के अंदर it is heteromorphic alternation of generations, क्योंकि heteromorphic का मतलब दोनों ही different होती है. gametophyte की shape भी different होती है और sporophyte की shape भी different होती है और एक दूसरे के साथ alternate करते हैं regularly. So that is why it is also called as heteromorphic alternation of generations. Question number 4, it says, what is the importance of the following? A, seed. So seed, dear students, in higher vascular plants, seed is involved in the formation of new sporophyte. So seeds are new sporophyte बनती है, and in some cases it is also used as food. Question number 4, part B, double fertilization. So dear students, double fertilization ensures the formation of fruit and seed and maximum supply of food for the nourishment of the development of embryo. Clear? Question number 4, part C, heterospory. So heterospory का जो importance है कि it is the production of different types of spores. One is large in size, that is megaspore, and it is the female spore, while the other is the microspore, which is the male, which produces the male gametophyte, and male gametophyte will produce the male gametes. So that is the importance. Now the question number 5. So pick and match the following. हमें नीचे कुछ यहाँ पर दिए गए हैं different about
10 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इसका हम उसी तरह से पहले कॉलम वन के अंदर वो तमाम स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो हमें एक सेट पे गिवन है 1 2 3 की शक्ल में, और उनके ऑपोजिट जितनी भी लिखी हुई है उसको कॉलम 2 में लिख लेंगे, और फिर इनके सामने एक कॉलम 3 बनाएंगे जिसमें हम इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। सो उसमें करेक्ट आंसर हम लिखेंगे। सो फर्स्ट कॉलम में द फर्स्ट वन इज फर्म स्पोरोफाइट। तो हमने जो सेकंड कॉलम है उसमें से सही चूज करके और उसको आंसर वाले कॉलम थर्ड कॉलम में लिखना है। सो फर्म स्पोरोफाइट, इट इज अ डिप्लॉयड जनरेशन। आंसर इज डिप्लॉयड जनरेशन। Number 2, the moss plant is gametophytic generation. जो moss plant है, it is gametophytic generation. Number 3, the gamete are haploid cells. मैं इनके सामने इधर से फर्स्ट कॉलम और उसके आगे उसका करेक्ट आंसर थर्ड कॉलम वाला बता रहा हूँ. Number 4, the spores are asexual reproductive structures. Now, number 5, vegetative reproduction, इसके सामने करेक्ट आंसर इसका आएगा, involves vegetative parts of the plants. Number 6, the oospore is the last cell of gametophyte. It is the last cell of gametophyte. Oospore. Now, number 7, the gamete is the first cell of gametophyte. Okay? ये gametophyte का first cell होता है. और now number 8, the spore mother cell divided by reduction division to form haploid spores. It divides by reduction division means the meiosis to form haploid spores. Number 9, the spore, और इसका correct answer है, is the first cell of sporophyte, and gymnosperms are the plants with the naked seeds. So first column के अंदर वो तमाम पार्ट्स, सेकंड कॉलम के अंदर उन्होंने उसको इंटरमिंगल किया हुआ है, उनको उनकी तरतीब को आगे पीछे किया हुआ है, और कॉलम नंबर 3 यानी कि आंसर वाला कॉलम, उसमें मैंने उसको आपके साथ हर एक के साथ मैचिंग उसका आंसर समझा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ईच क्वेश्चन हैज 5 ऑप्शंस, एनसर्कल द करेक्ट आंसर। तो हमें नीचे 5 ऑप्शंस दी गई हैं, उसको हमने करेक्ट आंसर पर जो है उसको चूज करना है। द फर्स्ट एमसीक्यू इज ऑल ब्रायोफाइट्स like mosses, liverworts and hornworts share certain characteristics. These are option alpha, reproductive cells in protective chambers and vexicuticle. Yes, it is true. Beta option, a vexicuticle, true leaves and reproductive cells in protective chambers. तो dear students, ब्रायोफाइट्स में ट्रू लीव्स नहीं होते, तो ये ऑप्शन गलत हो गई। ऑप्शन चार्ली, वेस्कुलर टिश्यूज, ट्रू लीव्स एंड वेक्सिक्यूटिकल, तो वेस्कुलर टिश्यू इनके अंदर होता ही नहीं है, ब्रायोफाइट्स ये नॉन वेस्कुलर है, ये भी गलत हो गया। ट्रू लीव्स ये भी अभी नहीं है। डेल्टा ऑप्शन, रिप्रोडक्टिव सेल्स इन प्रोटेक्टिव चैम्बर्स एंड वेस्कुलर टिश्यूज, तो वो तो ठीक है लेकिन वेस्कुलर टिश्यू के अंदर नहीं है, ब्रायोफाइट्स हैं, सो ये भी कंसीडर नहीं करेंगे। एंड लास्ट ऑप्शन एप्सिलॉन, वेस्कुलर टिश्यूज एंड वेक्सिक्यूटिकल, सो अगेन वेस्कुलर टिश्यू तो है नहीं, ब्रायोफाइट्स दे आर नॉन वेस्कुलर, सो एक ही ऑप्शन हमारे पास सही है, दैट इज ऑप्शन अल्फा, दैट सेज reproductive cells in protective chambers and vexicuticle. Now, MCQ number 2, it says a heterosporous plant is one that, heterosporous plant वो होगा जो कि option alpha produces gametophyte that bears both sex organs, so that doesn't make any sense. And beta option produces microspores and megaspores in separate sporangia giving rise to separate male and female gametophytes. Yes, it is true. तो हेट्रोस्पोरस जो प्लांट है उसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स मतलब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, और वो स्पोर कहाँ पर बनते हैं? इन द रिस्पेक्टिव स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर्स इन माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोर्स इन मेगास्पोरेंजिया। ऑप्शन सी इज अ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, सो नो दैट्स नॉट करेक्ट। ऑप्शन डेल्टा इज प्रोड्यूसेस 2 काइंड ऑफ स्पोर्स, वन एसेक्सुअली बाय माइटोसिस एंड वन टाइप बाय मियोसिस, नो, तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। हेट्रोस्पोरी में वो एक मियोसिस और दूसरा माइटोसिस से बने, दैट इज नॉट। एंड एप्सिलॉन इज रिप्रोड्यूसेस ओनली सेक्सुअली, सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस MCQ number 2 is beta option, but that is a heterosporous plant is that is one that produces microspores and megaspores in separate sporangia giving rise to separate male and female gametophytes. MCQ number 3, it says the male gametophyte of an angiosperm is G, dear students, तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन सही नजर आ रही हैं, लेकिन हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट को जो है उसको मार्क करना है। अल्फा ऑप्शन इज एंथर, तो एंथर इज नॉट द गैमेटोफाइट। बीटा ऑप्शन इज एम्ब्रियोसैक, दैट इज द फीमेल गैमेटोफाइट। सी और चार्ली ऑप्शन इज माइक्रोस्पोर, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसीडर किया जा सकता है। डेल्टा ऑप्शन इज जर्मिनेटेड pollen grain, so that is actual answer. And epsilon is ovule, तो ovule is related to female gametophyte, यहाँ पे मेल gametophyte की बात कर रहे हैं। तो dear student, the most closest and the most accurate answer for this question is germinated pollen grain, उसको हम कहते हैं male gametophyte of angiosperm. The last MCQ is important terrestrial adaptations that evolved exclusively in seed plants include all of the following except, तो जो जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनके अंदर जितने भी एडेप्टेशंस आई वो नीचे दी गई हैं, उनमें से एक है जो कि मैच नहीं करती। द फर्स्ट वन, अल्फा ऑप्शन, पॉलिनेशन बाय विंड और एनिमल इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय स्विमिंग स्पर्म, यस दैट इज इंपॉर्टेंट, ये तो ठीक है, हमने कौन सी जरूरत नहीं है जो इसमें नहीं है। बीटा ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू वेस्कुलर टिश्यू, डेफिनेटली वेस्कुलर टिश्यू से ही वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सीड प्लांट्स की बात करें, मतलब कि ट्रिक्योफाइट्स की। ऑप्शन चार्ली, रिटेंशन ऑफ गैमेटोफाइट प्लांट विद इन द स्पोरोफाइट, यस इट इज ट्रू। एंड डेल्टा ऑप्शन इज डिस्पर्सल ऑफ न्यू प्लांट्स बाय सीड्स, तो यहाँ पर डिस्पर्सल ऑफ न्यू प्लांट्स कहा गया, नए प्लांट्स सीड्स के जरिए डिस्पर्स नहीं होते, क्लियर, सो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। एंड एप्सिलॉन इज प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विद इन द सीड, दैट इज ट्रू, सो द ओनली रिमेनिंग ऑप्शन व्हिच इज नॉट correct related to this statement is delta option, that says dispersal of new plants by